Hello and welcome back to my YouTube channel PFMS Operations. My name is Hasib. This video is about the revised and a new procedure of fund flow under central sector schemes. Central sector schemes are those schemes which are entirely funded by the central government only. There is no state share for these schemes. जिस तरह से PFMS ने लास्ट ईयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक रिवाइज्ड प्रोसीजर स्टार्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक सिंगल नोडल बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है at the state level for each centrally sponsored scheme. And for all the implementing agencies which are registered down below, उनके लिए आप जीरो बैलेंस अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं या आप डायरेक्टली SNA बैंक अकाउंट मैप करते हैं. ठीक इसी तरह से अब आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी PFMS पे ऑपरेट करनी है थ्रू ए सेंट्रल नोडल एजेंसी. सो अकॉर्डिंग टू द OM, जिसमें रिवाइज्ड प्रोसीजर के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, PFMS पे इन स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए दो मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, जिनमें से आपको एक मॉडल चूज करना है. And depending upon the various types of conditions for each scheme, आपको Model 1 या Model 2 ऑपरेट करना है PFMS पे. I will try to explain both the models in detail. आप किस तरह से Model 1 या Model 2 ऑपरेट करेंगे अपनी स्कीम्स के लिए. First of all, if you want to check the whole official memorandum, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप उस लिंक के थ्रू ये OM डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऑफिशियल मेमोरेंडम में पूरी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है आप किस तरह से Model 1 या Model 2 ऑपरेट करेंगे और आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि आप मॉडल 1 ऑपरेट करेंगे या मॉडल 2. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्कीम्स व्हिच विल बी ऑपरेटेड इन मॉडल 2 ऑफ CNA. Those schemes can be shifted back to Model 1 later depending upon the readiness of the RBI. Model 1 is the permanent solution for the central sector schemes to be operated on PFMS. Few schemes जिनका annual outlay less than 10 lakh है and UTs without legislation जिनमें central sector schemes operate हो रही है, they don't have to operate any of the models of CNA. They can work directly under PFMS. But for states with their own legislation and the schemes जिनमें annual outlay more than 10 lakh है, उनके लिए आपको Model 1 या Model 2 operate करना है. Model 1 is basically the Treasury Single Account module of PFMS and Model 2 is quite similar in operation as the SNA module of PFMS for centrally sponsored schemes. So first I will explain the Model 1 in detail. In this model, the scheme will be implemented through Treasury Single Account. And according to this model, first of all, each ministry and department has to decide and designate a central nodal agency. Model 1 में आप उन schemes को operate करेंगे जिनका annual outlay more than 500 crore है और जिन schemes में आपको state implementing agencies की requirement नहीं होती है. जिन स्कीम्स में आप डायरेक्टली वेंडर्स या बेनिफिशियरीज को मिनिस्ट्री से पे करते हैं, उन स्कीम्स के लिए आपका मॉडल 1 मैंडेटरी है. सो इन मॉडल 1, ईच डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कैन डेजिग्नेट एन ऑटोनोमस बॉडी एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी. एंड वंस द सेंट्रल नोडल एजेंसी और CNA इज डेजिग्नेटेड, यू हैव टू ओपन अप ए बैंक अकाउंट इन RBI विद eCuber. जिस तरह आप स्टेट्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए एक स्टेट नोडल एजेंसी डेजिग्नेट करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए एक सेंट्रल नोडल एजेंसी डेजिग्नेट करनी है. एंड वंस दैट एजेंसी इज डेजिग्नेटेड, आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है RBI में विद eCuber. एंड वंस दैट बैंक अकाउंट इज ओपनड, नाउ इफ यू आर ऑपरेटिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और सब एजेंसीज इन स्टेट्स, आपको उन सब एजेंसीज या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का भी बैंक अकाउंट डायरेक्टली RBI में ओपन करना है स्कीम वाइज. एंड वंस ऑल द बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपनड, आपको बैंक अकाउंट्स रजिस्टर करने हैं PFMS पे एंड मैप करने हैं अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ द स्कीम, स्टार्टिंग विद द बैंक अकाउंट दैट हैज बीन ओपनड फॉर द सेंट्रल नोडल एजेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैंक अकाउंट आपने सेंट्रल नोडल एजेंसी के लिए ओपन किया है इन द RBI, पहले आप वो मैप करेंगे एंड दैट बैंक अकाउंट विल बी अप्रूव्ड बाय द लेवल 1 अप्रूवर ऑफ PFMS. उसके बाद आप सब एजेंसीज का भी बैंक अकाउंट मैप करेंगे and these bank accounts will be approved by their corresponding funding agency. And all of these bank accounts in RBI will be mapped in the TSA or Treasury Single Account module of PFMS. And once the mapping has been completed, जिस तरह से आप drawing limit set up करते हैं for your implementing agencies under centrally sponsored schemes, ठीक उसी तरह से आपको assignment set up करना है for all the sub agencies in the Treasury Single module of PFMS if you are operating this Model 1. Assignment is just like the drawing limit, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक फिगर प्रोवाइड किया जाता है कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं फ्रॉम द RBI बैंक अकाउंट. सो बेसिकली नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फंड्स विल बी टेकिंग प्लेस इन द मॉडल 1 ऑफ सेंट्रल नोडल एजेंसी. All the funds will be lying in the RBI account of the central nodal agency and the sub agencies will receive the sub assignment
and within that sub-assignment they can file the expenditure to their vendors and beneficiaries. And the holding bank account, which has been recently authorized and operationalized on PFMS for the tax deduction payments, can be operated for only to hold the amount जो आप deduct करते हैं from your vendors. That amount can be paid through any offline mode like check or internet banking. So no parking of funds will be taking place anymore in any of the agency or any bank account for the schemes that will be operated through Model 1. So this is the procedure of operating Model 1 of Central Nodal Agency, or the revised procedure of funds under central sector schemes. Now Model 2 of CNA is just like the SNE module of PFMS, जिसमें आप sponsored schemes implement करते हैं using a state nodal agency with a single nodal bank account. Exactly like that, आपको central sector schemes के लिए एक central nodal agency पहले designate करनी है, and after that you can open up a bank account in any commercial bank and register it as a central nodal bank account. But Model 2 is applicable for those central sector schemes जिनमें annual outlay less than 500 crore है और जिनमें आप sub agencies या state agencies operate करते हैं below the central nodal agency. And अगर आप पहले से ही sub agencies with their saving or current bank accounts operate कर रहे हैं for that scheme, then all the unspent balance जो उन bank accounts में है वो आपको remit करना है back to the designated central nodal bank account. Now depending upon the operational requirements, आप उन सब agencies के लिए zero balance subsidiary accounts operate कर सकते हैं या फिर आप directly mapping कर सकते हैं with the central nodal bank account. But the condition is, जिस बैंक में आपका central nodal bank account open होगा उसी बैंक में आपको zero balance subsidiary accounts भी open करने हैं. And once all these bank accounts are ready, you have to map all these bank accounts on PFMS, starting with the central nodal bank account, which will be added by the central nodal agency, and this bank account will be approved by the level 1 approver of PFMS. And down the hierarchy in each state, you have to also map the sub agencies with their zero balance subsidiary accounts, or you can directly map these agencies with the central nodal agency. And when the mapping has been completed, all the sub agencies including the central nodal agency has to operate the EAT or REAT module of PFMS. In some schemes, an external software is integrated with the PFMS where agencies can operate on that IT software, but it has to be made sure that all the expenditure and the utilization of funds is properly streamlined with PFMS. Now, जिस तरह से आप drawing limit set करते हैं for the implementing agencies in SNE module, likewise आपको Model 2 में भी drawing limit set करना है, starting with the central nodal agency जिनका drawing limit principal accounts office से set होगा, and then drawing limit will be set for all the sub agencies in all the states by the central nodal agency. And within that drawing limit, sub agencies can file the expenditure for their vendors and beneficiaries. Now, for the tax deduction payments, agencies of that scheme can also register a holding bank account. So in Model 2, no parking of funds is allowed for more than 2 weeks, because in holding bank account, the funds can remain only for 14 days, and within those 14 days, you have to make the tax deduction payments. Apart from that, there is no parking of funds in any saving or current bank accounts of the sub agencies. The funds will only remain in the central nodal bank account. The implementing agencies or sub-agencies will only receive the drawing limit, and within that drawing limit, the expenditure can be made, and the payment to the vendors or beneficiaries will be directly done from the central nodal bank account or through the zero balance subsidiary account. And obviously, at the end of the utilization of funds, central nodal agency has to submit the utilization certificate of the transferred funds from the central government. Since only the central nodal bank account can be a saving bank account, so all the interest generated for a central sector scheme will be generated in the CNA bank account. For sub-agencies which are operating zero balance subsidiary accounts, no interest will be generated in those bank accounts, and even the holding bank accounts are non-interest bank accounts. Hence, all the interest income will be earned by the central nodal agency in its central nodal bank account, and the agency has to remit the interest generated back to the Consolidated Fund of India through NTRP portal or Bharat Kosh portal or any other medium as guided by their ministry. So this is how the Model 2 of revised procedure of fund flow under central sector schemes can be implemented on PFMS. So that's all for this video. I don't have the practical session on the operationalization of a central nodal bank account yet. As soon as I am able to get the practical functionality of a central nodal bank account and the CNA agency, I will upload a video on that. Till then, please subscribe my channel and also like this video. And I hope that you have a very nice day. Take care. Bye.